मोबाइल से काम चलाना पड़ रहा है, थोड़ा एक्टिविटी है ही नहीं है किसी चीज़ का, क्या कर रहा है, छोड़ देंगे। डिजिटल बोर्ड रहता तो आराम से बैठ के आराम से आदमी बात करता पढ़ाता, जैसे PDF लगा देता बात करता। अभी बहुत लड़की आया तो पढ़ने के लिए, ऐसे बस लग जाता है, सब पढ़ना पड़ा, समझाना पड़ता है, टेंशन मुक्त रहता है नहीं। बहुत बच्चे मैथ बताते, रीजनिंग बताते, उसमें जीके है और अन्य चीज़ें हैं, चलता है ज़्यादा। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ता, वो टाइपिंग करके रखना पड़ता, बाकी तो कैलकुलेशन तो है ही है। रात में बैठ के सारा 2 घंटा 3 घंटा वैसे यदि पढ़ाता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई भी काम करने से क्या है ना, एक्टिविटी तो होनी चाहिए, डेली होनी चाहिए। अब देखो इतना दिन से सब कर रहा है, एक को दिन छोड़े नहीं है। एक लाइव आना पड़ना है कि एक दिन बस बंद किए थे हल्का फुल्का, वो भी फिर आधा घंटा आके लाइव हुए थे, नहीं पढ़ाए थे। अकेले रहते ना मजा आता है। तो जल्दी आइए आप लोग, सब लोग, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। आज के समय 2 ही 3 पैसे ही हैं, एजुकेशनल पैसा है, संस्था में बहुत पैसा है, जल्दी तब चल जाए ना, पैसे पैसे है। रिफॉर्म एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, ये तो हो चुका था। पब्लिक एग्जामिनेशन, अच्छा, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 is law passed the Lok Sabha aimed at addressing the issue of the malpractice in the government recruitment and examination. It came into effect of the 21st June 2024. अच्छा, it defines various offenses related to unfair means such as the paper leak, use of the fake websites, fake websites and collusion with the service provider. It prescribes strict penalties, include the minimum jail term 3 to 5 years and fine up to 1 crore. It holds service provider engaged for the exam conduct liable with fines of 1 crore and 4 years bans on the involvement in public exams. And it empowers police officer not below the rank of deputy superintendent or police assistant commissioner of police and investigate offense under the act. It will cover the wide range of the central government recruitment exam, including those conducted by UPSC, SSC, and RRBs, and IBPS and NTA. हाँ हेलो, क्या हाल चाल है, पढ़ाई चल रहा है? And the punishable offense define the act. Punishable offense defined in the act: leakage of the question paper and answer key, directly or indirectly assisting candidates in and the unauthorized manners, tampering with the computer network resource or the system, creation of fake website to cheat or the monetary gains, conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters, and manipulation of the seating arrangement and the allocation and the dates and the shift to facilitate unfair means. Unfair means. New standard for preventive detention 2024. Case Jaisila Saji versus Union of India 2024. Supreme Court established new standard for preventive detention under the Coffee Posa Act, COFE POSA Act 1974.
Fair and effective opportunity. Supreme Court mandate that is a detaining authority must provide detainees with copies of all documents relied upon the detention. Failure to do so invalidate detention. Constitutional rights. The personal liberty is a paramount constitutional right in Article 22. Not providing relevant document to challenge the detention violate their fundamental rights. Okay. Non-arbitrary actions. Authorities must be ensure no arbitrary action and respect detainees' rights, including the providing document in the language that detainees can be understand. Avoiding undue delay, the authorities must ensure the timely communication regarding detention, leveraging available technology. Yes. Prevents protection against arrest and detention. Constitutional basis. Article 22 of the Indian Constitution protect the individuals against unlawful arrest and detention. Types of detention and punitive detention and preventive detention. Punitive detention follows due to the process after trial and conviction, and preventive detention is that means aimed at preventing future offense based on the suspicion without the trial or conviction. Article 22, right to be informed about the ground of arrest, right to legal representation, right to promote judicial review within the 24 hours, right to against the prolonged detention beyond 24 hours unless authorized by the magistrate. Preventive detention cannot exceed 3 months without review from that and advisory boards. And the ground of detention is communicated except fact against the public interest and determine can make the representation against the detention. Legislative powers. Parliament authority can make law for the preventive detention and related to defense, foreign affairs, and national security. National security. देखिए क्लास केवल क्या है, पढ़ने वाली क्लास है। अगर आप क्या करेंगे, बैठ करके जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप पढ़िए उसको, और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो चीज़ नहीं समझ आता उसमें मुझसे पूछना है। तो अभी हम लगभग 9:15 पर आपसे रूबरू हो जाएंगे, क्योंकि हमको भी पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर, जीएस के पोर्शन पढ़ना पड़ता है और भी पढ़ना पड़ता है। तो अभी मैं अपना पढ़ रहा हूँ, आप भी लोग बैठ के पढ़िए, क्योंकि ये अलग तरह से चीज़ें हैं कि इसमें हम लोग आपस में क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आ जाएगा तो डिस्कस ही किया जाएगा। ओनली डिस्कस द क्लासेस अबाउट द एनी क्वेश्चंस, ठीक है, टू कंसर्न योर माइंड्स। That is the detain is unlisted parliament authority can be make laws of preventive detention related to defense, foreign affairs, and national security. State legislature can make laws for security, public order, essential service. Amendment 44, Amendment 1978 reduce the detention without advisory board opinion from 3 months to 2 months, not at the implemented. Preventive detention laws in India, COFE, COFE POSA 1974, the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of the Smuggling Activities Act. National Security Act 1980 deal with the national security threats. UAPA 1967. Okay. Unlawful Activity Prevention Act frequently amended important judicial cases. Marippan versus District Collector 2014. Madras High Court reiterated that preventive detention is a preventive, not is punitive. Okay. 2 से 3 पेज लगातार डेली पढ़ते रहिए। इससे पढ़ने से फायदा यह होता है कि अब रीडिंग कैपेसिटी बनी रहती है और पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर पढ़ते रहेंगे, अब अपना क्या मेंशन करिए कौन कौन है भाई, 4-5 लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो आप अपना नाम बताइए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए यहाँ पर आपको न रील्स मिलेंगे न बकवास मिलेंगे, कोई चीज़ें, बस क्या है पढ़ने की इच्छा से, क्योंकि जो मेरे 1.5 घंटा 2 घंटा मिलता है पढ़ने का वही पढ़ा जाए। और देखिए पढ़ाई ऐसा माध्यम है ना, हर चीज़ पा सकते हैं, हर चीज़ आप कमा सकते हो, क्योंकि एक अच्छा अधिकारी बनने की पढ़ाई होना चाहिए, एक अच्छा नेता बनने की पढ़ाई होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन की पढ़ाई होना चाहिए, एक अच्छा जो है समाज को चलाने वाला सोशलॉजिस्ट बनने के लिए पढ़ाई चाहिए। अब कोई भी एक अच्छा साइकोलॉजी बनने के लिए, साइकोलॉजी बनने के लिए पढ़ाई चाहिए, एक अच्छा साइंटिस्ट बनने पढ़ाई होना चाहिए। तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं बन सकते हैं, तो पढ़ना ही पड़ता है। अब भले ही आप लोग क्या है रील्स और अन्य चीज़ें देखते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। रील्स से नहीं देखा जाता है ज़्यादा। तो ये देखिए क्या है कि बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019।
Allahabad High Court state preventive detention infringes person freedom and should not be imposed casually. Abhairaj Gupta versus Superintendent Central Jail to 2021. Allahabad High Court ruled the preventive detention should not be used when the person is already detained unless necessary for maintaining public order. Removal of Vice President and a constitutional provision. Vice President. Article 63, there shall be the Vice President of India. Article 64, the Vice President serves as the ex officio chairperson of the Rajya Sabha and cannot hold any other office of profit. Article 65, if the Vice President assume the duties of the President, they will not perform the chairman role in Rajya Sabha and will not receive the chairman salary or allowances under the Article 97. Resignation must be submitted later to the President effective upon the acceptance. Qualification Article 66 must be an Indian citizen, at least 35 years old, eligible for the election and member of the Rajya Sabha, must not hold any office of profit under the union, state government, local authorities or public authorities. Election Article 66 and 68. Electoral College consists of the elected and nominated members from both the House of Parliament proportional representation by the single transferable vote and conducted by the secret ballot. Vacancy Article 68. Election must be held before that end of the current terms. The Election Commission supervises the process. Oath Article 69. Vice President must take an oath before the President or the appointed representatives. Terms Article 67. The Vice President serves as a 5-year terms and removal Article 67D. And resolution passed by effective majority of Rajya Sabha and then agreed to by the Lok Sabha at least 14 days notice before the moving the resolution. No precedent recorded when the resolution can be and considered in the next session. Okay. Okay. That is Article 92, and the chairman or deputy chairman cannot be preside over the proceeding will there the removal resolution in under the consideration. Powers and function. The chairman can adjourn the house or suspended sitting in the absence of the quorum. 10 scheduled chairman decided on disqualification due to defection. Chairman approval required for raising and the breach of अरविंद करल्लफ फ्रॉम हरियाणा आई एम 23 मैंने मेरी मिमी को दोस्त को प्रपोज कर दिया सी ऑलमोस्ट 4 उन्होंने मिनी मिनी को बता दीजिए कि नाउ सपोज माय सिचुएशन एंड प्लीज टेल मी व्हाट शुड डू जा ठीक तो है अरविंद भाई ठीक तो लव फ्रॉम हरियाणा ठीक थैंक यू देखिए ये भी तो यार ज़िंदगी की पार्ट होती है और लव फ्रॉम हरियाणा आई एम 23 मैंने मेरी मम्मी की दोस्त को प्रपोज कर दिया अच्छा मम्मी मम्मी के दोस्त को कर दिया सी इज़ ऑलमोस्ट 40 उन्होंने मम्मी को बता दिया नाउ सपोज माय सिचुएशन एंड प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड डू ठीक है तो जीवन का पार्ट है जीवन का जो लव एंड अफेक्शन जो होता है जब किसी के साथ हो अच्छा है कोई बात नहीं है तो देयर शुड बी इफेक्टिव करेक्ट प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू क्या आप करेंगे वो तो आपको डिपेंडेंसी है ना क्या आप करना इससे अब सोच लीजिए आपको क्या करना है अब तो जानते ही क्या करना है किस किस रूप में जानते हैं किस रूप में देखते हैं वो सब है कि दैट इज लाइक नॉट प्रपोज yet use not for that times I will to take the interest what to should and effective okay you just like that 23 and your mummy just like the 40
The original constitution provided that vice president and would be elected by two houses of parliament assembled. Joint meeting that this cumbersome procedure was done away by the 11th Constitutional Amendment Act 1961. Impeachment process and judicial accountability in India. Okay. Impeachment process, judge can be removed by the message. Why will you message deleted? मैसेज डिलीट कर दिए. Judge can be removed by parliament for and probe that misbehavior of the incapacity and Articles 124(4)(1) 218. A motion for impeachment requires support from 100 members in the Lok Sabha or 50 members in the Rajya Sabha. Okay, the speaker of chairman decide whether to admit the motion after the reviewing that material inquiry committee. That is a 3-member committee is formed, consists of the Chief Justice of India, Supreme Court judge, okay, Chief Justice of the High Courts, and distinguished jurist. And the committee conducted through the inquiry examining that evidence and witnessed. Committee report and parliamentary debate. It is guilty that committee report is debated in. In the parliament, both the houses must approve the motion with the majority of total membership. The motion that majority of membership, the 2/3 of the Chief Justice. Report parliament debate. Majority of total membership, 2/3 of the member present voting final removal of president. A president for removal, check and balances. High threshold for impeachment protect against the misuse. पढ़ लिया जाए थोड़ा बात किया जाएगा नहीं है. Judicial experts ensure the impartiality, inquire parliament oversight, ensure democratic scrutiny. Instance of impeachment attempts of justice versus Ramaswamy 1993. Justice Soumitra Sen 2001 faced the impeachment attempt but none led to the full removal. Right to be forgotten. Definition allows individual to request a removal of personal data from the digital platform. It is the outdated, irrelevant or harmful to privacy. Okay. European context established in 2014 by the Court Justice of the EU, Google Span case, enshrined in Article 17 of the General Data Protection Regulation (GDPR), requires such engine redress requires a request for removing irrelevant and excessive information. Other nation, Canada 2023 upheld the right to demand such blocks on the personal data. California, online the Eraser Law 2015 and Minor of the Delete Act 2023 and for adults. Interpretation in India. Judicial recognition justice and K.S. Puttaswamy case 2017. Recognize privacy as a fundamental rights implicitly including the right to be forgotten but not as an absolute right. Digital Personal Data Protection Act 23 and recognize the right to erasers. IT Rule 2023 that requires intermediaries to remove the privacy violating contents within 24 hours. And the related judicial president, Dharmraj Bhushan Dev State of Gujarat, was denied the removal of the acquittal and detail from the public records. Delhi High Court 2021 allowed removal of such details on criminal case, social and career protection. ये तो है सही है. Supreme Court order July 2022 directed the state to remove the personal detail of couple from the search engine. Kerala High Court denied the right to forgettance, and Himachal Pradesh High Court 2024 July and directed redaction of that is name of requited individuals and a rape case and prevent stigma. Unified Pension Scheme UPS, Unified Pension Scheme UPS and approval. बस थोड़ा पढ़ना इतना पढ़ेंगे बस उसको कल थोड़ा देखिए थोड़े जल्दी कहने मतलब है ना रीडिंग करने से ये फायदा होता है कि आपको समझ में आ जाता है, स्पेलिंग समझ आती है, एरर नहीं होंगे,
और आपका जो रीडिंग हैबिट होगा बनता जाएगा। अप्रूव द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड यूपीएस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इफेक्टिव फ्रॉम द अप्रैल 1 2025। सही है। Transition central government employees will shift from the national pension system, okay, NPS to UPS. State can also choose to adopt the schemes. Provision of UPS assured pension 50% of the average basis pay last 12 months for employees with 25 plus years of service. Proportional reduction for the shorter service minimum 10 years. Minimum pension 10,000 per month for those referring with a 10 plus year of service. Family pension 60% of the retrieved last pension paid to the family. Inflation indexation. Pension adjusted based on the All India Consumer Price Index. Industrial workers. Lump sum payment equal 1/10 of the monthly pay plus DA for every 6 months of the completed service. Choice for employees. Employees may opt to NPS, but it cannot change it once selected. Key difference between the UPS, OPS and NPS. Pension calculus. OPS 50% last base salary plus DA. UPS 50 plus average salary plus DA in the last year before retirement. Employees contribution. OPS no contribution. UPS 10% basic pay with government contribution of 18.5%. NPS 10% employee contribution, 40% government contribution. Tax benefit under NPS employees can be claimed tax benefit for government contribution. Clarification is the awaited for UPS. Higher minimum pension UPS offered a 10,000 minimum pension compared to 9,000 in UPS. And lump sum payment. UPS provided lump sum payment based on the salary plus DA without affecting that pension amount. Next topic is next time tomorrow high court ruling a वक्फ प्रॉपर्टी ये दिया है बस। देखिए क्या है कि हम भी इसमें क्या करंट अफेयर 2025 का पढ़ रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने है, ये यूपीएससी के लिए है, इसमें कुछ ऐसे हम मिलते रहेंगे, क्या पढ़ते रहेंगे हम लोग। बस 2 पेज और बचा है, कल इस खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंट्री के बारे में। अब देखिए एक एक कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, धीरे धीरे मेरे पास आते इकोनॉमिक्स एंड रिव्यू पढ़ेंगे। देखिए बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, एक एक चीज तैयार होता जा रहा है, सब चीज देखते जा रहे हैं। तो कल इसको पढ़ा जाएगा, तो आप तैयार रहिएगा। अब आ जाइए, आपका जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन को देखा जाए। और चलिए कौन कौन है, क्वेश्चन क्या किसका बचा हुआ है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब आप लोग डिस्कस, देखिए क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या पूछना, बोले थे ना क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ता है। पूछिए क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे, बोलिए जल्दी से। निकल जाओ, बात करना, क्या बात को बताना। दरवाजा बंद कर देना भी। हाँ जी, क्या सोचना है, ओके का मतलब बात करना, हमसे बात करा देना, ठीक है ना। नहीं किसी का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं पूछना है क्या, मैं तो अपना पढ़ चुका हूँ क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन को पढ़ चुका हूँ, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। कितने लोग क्वेश्चन पूछेंगे,
कितने लोग क्वेश्चन पूछेंगे? That is law of conservation of momentum in collisions. That is collision one dimension. Weightless in the satellites and binding energy of the satellite. This is a escape velocity. It is a अपना क्वेश्चन आप डालिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो भी। आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अपना ग्रुप, अब सब लोग ग्रुप में आ जाइए ना, सब लोग देखिए कौन कौन आ गए हैं, ग्रुप में आइए सब लोग, क्योंकि मैं अपना आधा घंटा पढ़ चुका हूँ। मैं बोला ना आधा घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद आपके साथ जुड़ जाएंगे। एंड इट इज एस्केप वेलोसिटी दिया ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, ओके, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स, the energy required to remove the satellite from the one orbit around the Earth infinity to call this binding energy of the satellites. The total energy of satellite minus g mm 2r and plus g mm 2r and the zeros, hence the binding energy of satellites. देखिए ये क्लास केवल पढ़ने वाला है, अभी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसे पूछिए हमसे। इसके velocity, it is minimum velocity with which his body must be projected vertically upward in order that may be that escape from the gravitational field of earth. Escape velocity be 2gr under root में। The value of escape velocity the earth surface is 11.2 km per second. Relation between the orbital velocity and the satellite and the escape velocity ve and under root 2 and v naught. Weightlessness in the satellite's body is placed on the surface of, नहीं कुछ क्वेश्चन है। Thermodynamics, zeros law of thermodynamics and RS Paul. This law is formulated by RS Paul in 1931, and that is zero law of the thermodynamics state that a two system obey the separately in the thermal equilibrium with first system C and then MB or the thermal equilibrium with each other. First law of thermodynamics, and this law says the amount of the given heat given in that is system used to the two-way, first to increase the internal, that is thermal internal energy of second to the external works. Photoelectric effect matters with atomic radioactivity. देखिए बहुत सारे इसमें दिया हुआ है, क्लासिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमी फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर तो हम पढ़े हुए हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड ट्राइडोफाइटा, किंगडम एनिमिलिया and phylum Coelenterata and the Cnidaria and the Cetinifora. Many of topics is discussed about biology and phylum Annelida and phylum Anthropoda. And the mosquito, the Johnston organ sensitive to sound is present. It is the antenna. Yes, vertebrata, Chloropta group and Crenata. And that is baboon is the largest monkey and silverglands and plant is well. Sea cow, dolphins are most intelligent. Second, man is gorilla really drink waters. Okay. नहीं कोई क्वेश्चन है भाई? तो हम देखिए सेल यूजर में यहाँ तक पढ़े हुए थे, इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड स्मॉलेस्ट सेल इज द माइकोप्लाज्मन and Galisepticum of the totipotency is that order transform into other types of cells. Hari Kishore, I need your help. What's of what do you help? Yes, you speak B. I need small help financials. Okay.
or tetipotency animals, plant cells, and the capability of the tetipotency that is transformed into other types of cells. Mm, membrane organism, thin, flexible, living plasma. Uh, you get the 2000 rupees. This is a small channels for that. You सॉरी सर, ये हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है? इतना पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। सुनो ना, 2000 इज़ बिग अमाउंट। क्योंकि अब छोटी संस्था मेरा तो देख ही रहे हैं ना, मेरे ना सब्सक्राइबर हुए, ना कुछ नहीं हुए हैं, कुछ नहीं, एनीवन सब्सक्राइबर। जिसके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा, जो पैसे ज़्यादा कमा रहा है, उससे आप हेल्प माँग सकते हैं। अ, अभी तो मैं आई एम द स्टूडेंट फॉर दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ओनली द डिपेंडेंट ऑन द फैमिली। Nucleus in the near the center of the cell, pushed in one of the side of the cytoplasm and endoplasmic reticulum. Rough ER is abundant, rough ER is sparse, and that is glycosomes absent, present lysosomes. They have the lysosomes. They are generally do not have the lysosomes. Vacuums. Vacuoles cytoplasm contains small vacuoles. The principal center is space occupied by the large vacuoles and plastids. Plastids are absent, plastids are present. Golgi body is prominent and highly complex, has a subunit of the Golgi apparatus called dactysomes. Central presents animal cells and absence and reserve food as material glycogen starch. Glycogen starch. Hmm. Reserves food and glycogen that is present is starch and centrioles present or absent and Golgi body is prominent and highly complex has subunit of Golgi apparatus called as a dactysomes. Vacuole cytoplasm contains small vacuoles the present central space that peripheral central space are occupied by the large account that is the lysosome. They have the lysosome. They generally do not have the lysosomes. And the lysosome, they have the lysosome. They generally do not have the lysosomes. Like glycosome absent, present, and endoplasmic reticulum rough ER is absent animal cells. And the rough ER difference nucleus in the near the center of the cell. The pushed in one of the side of the peripheral cytoplasm. That is nucleus near of that is central cell and that is thick rigid and tight. कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है। इसमें देखते हैं लाइसोसोम्स है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस गोल्गी क्वार्टर्स, न्यूक्लियल प्लाज्मा एंड प्लांट सेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडिल लैमेला, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, and the cytoplasm, praxisome, vacuoles, microtubules, and a smooth endoplasmic reticulum, lysosome, and that endoplasmic reticulum. Golgi apparatus and the plasma membrane lysosomes. Central ribosomes and mitochondria and envelope the ref is the endoplasmic reticulum nucleus and the cytoplasm nucleus and the nuclear envelope and reticulum endoplasmic smooth Golgi apparatus and microvilli. Structure and function of cells and Knoll and Ruska 1931.
and that discovered by electron microscopes. This microscope magnified a cell about 1 to 2 lakhs times. And structure recognition of cell viewed by electrons microscopes include the following structures: cell wall. Cell wall must be fungi and prokaryotes, bacteria and blue aerial algae, and plant except gametes and surrounded by its wall and term as well as that animal cell wall is found is absent, and instead there is an extracellular matrix made of sugar and proteins. In animal cell is found to be the absence, instead they have an extracellular matrix made of sugar and proteins. In a true bacteria and a cyanobacteria, cell wall is made of the peptidoglycan, while in most fungi it is made of the chitin. It most of and algae and the higher plant cell wall is made of the cellulose in plants and mainly consists of the 4 layers. Middle lamella composed of the pectin compound, primary walls, secondary walls, and tertiary walls originally found in the plants. The main function of cell wall is protect cytoplasm and plasma membrane from the external shocks. That is the ripened fruits and softening occurs due to the dissolution. इसमें बस हमको लगता है कि अब कोई जुड़ेगा नहीं, ठीक है, बस 15-20 मिनट तक पढ़ा जाएगा, उसके बाद इसको बंद करके रख देंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा. And that is ripe fruit as softening occurs due to the dissolution of pectins. Plasma or cell membrane, cytoplasmic membrane or plasma lemma. Cell membrane is the selectively permeable membrane that allows the movement of some molecules, restrict the others. Thin film like the covering present around the cell. Singer and Nicholson, 1972, proposed most of accepted fluid mosaic model of plasma membrane structure. It is described the plasma membrane as a fluid combination of the phospholipids and cholesterol and protein. It does not have any type of the nucleic acid. Beside plasma membrane is eukaryotic cells, and intracellular membranes is also present, which is surrounded that vacuole and organelles. Main function of cell membrane is to regulate and control the flow of the material into the outside the cell and the diffusion of O2 and CO2, the movement of the substance across the membrane across the following processes. Diffusion, it is the spontaneous movement of the substance such as CO2 from the region of the high core concentration into region of the other low concentration. It does not require the semi-permeable membrane. And osmosis, it is the passage of the water from the region of that high water concentration through the semi-permeable membrane or region to low water concentration. Osmosis is the special case of diffusion in which water solvent diffuses across the membrane. That is movement of water or in animal cells may be take place in the different manners. In the water concentration of solution surrounding the cell is too high, the cell burst due to endomosaic entry water inside the cell. Such solution known as a hypotonic solution. If the water concentration of solution surrounded the cell too low, the cell shrinked due to exosmosis, outward movement of water. This solution is known as a hypertonic solution. तो हमको लगता है कि आप लोग नए क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको अपना एक विराम देना चाहिए. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. किसी का क्वेश्चन है, हमको लगता है किसी का क्वेश्चन ही नहीं. ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में जो है कल से हम पढ़ेंगे. प्रोटोप्लाज्म में किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम रख देते हैं. मीनिंग कल. थैंक यू वेरी मच.